आपकी चिट्ठियों, ट्वीट और इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि इस राज्य में संवैधानिक ढांचे का निर्वहन नहीं हो रहा है। कहीं कहीं संविधान के अनुच्छेद के बाहर सरकार जा रही है। ऐसे में उपाय क्या है? पहले तो हेमंत जी, आपको शक है कि इस बारे में? पश्चिम बंगाल की विधानसभा पूरे देश में अकेली विधानसभा है जिसके सत्र की शुरुआत बिना राज्यपाल के अभिभाषण के हुई है। ठीक। तो और ये अपने देश के 70 साल के इतिहास में किसी भी विधानसभा का नहीं हुआ है। तो श्रीमान, नंबर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। तो श्रीमान, जब संवैधानिक ढांचा टूटता है तो राज्यपाल और केंद्र सरकार के पास औजार क्या होते हैं उसको ठीक करने के? मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूं, क्लास में टॉपर रहा हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मेरे अध्यापक ने मुझे कभी प्रताड़ित नहीं किया, सिखाया है। मैं लगातार सरकार को आग्रह करता रहता हूं, अनुरोध करता रहता हूं, और मैं आपको आश्वासन करता हूं सरकार पर बड़ा भारी असर है। अभी कुछ गिने चुने पॉलिटिकल फुट सोल्जर्स रह गए हैं जो सरकारी ट्रेजरी से पैसे लेते हैं, कम रह गए हैं। क्यों? कि राज्यपाल की हैसियत से मेरी दायित्व को चिन्हित कर कर जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, आप मेरे किसी भी ट्वीट को देख लीजिए, वो मेरे मुद्दे जनहित के हैं, सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने के हैं, सरकार को मर्यादा में रखने के हैं। धनखड़ जी, कि राज्यपाल के अभिभाषण के बगैर विधानसभा का सत्र हो, यह संवैधानिक ढांचे के टूटने का कारण है या नहीं? इस विषय पर जब मेरे सामने कोई मुद्दा आएगा तब विवेचन करूंगा। धन्यवाद। टीवी9 भारतवर्ष और टीवी9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर। Sir, hello, sir. This is not really a question that I'm asking you. This is something that I wish to know. We've been hearing you, we've heard you this morning. You are rightly or wrongly very critical about the current government. You know, I am a person, I'm an optimist, eternal optimist. I like to see some nicer things in everything. So I would want to ask you that, do you see something good in this current government? Can you tell us what you have observed, which we can say that these are the few right things and good things for people that the current government has done? Thank you. It's a very good question. And let me tell you, I have gone on record, and that's the only time I have been on the front page of newspapers. Because in the state of West Bengal, if you appreciate the government, you see two things on front page. One is a government advertisement, and second is what is favorable. So the governor has appeared on some occasions. When I went to Vishwa Bangla Kendra, I saw it for the first time. What an infrastructure. And that was a great gathering. People from more than 30 countries had come. Rotarians from all over the country. When I got into my car, I called the Honorable Chief Minister, ma'am, what an amazing infrastructure you have created. When I went to North Bengal, in some parts I saw roads being very excellent. I said, ma'am, infrastructure is taking place. But then I have to ask her, ma'am, what happened to Bengal Global Business Summit? You spent thousands of crores on that. I am not critical, there might be performance. There are issues. For example, when I raised PM Kisan issue, the government says we are doing this much for farmers. I appreciate. But I tell the government, why are you not taking 100% assistance of the central government? Why our farmers are losing? What you are giving to them is not even 10% of what the central government would otherwise give. So I keep it very balanced. But let me tell you something very important. We had a governor's conference in 2019.
I was heading a group of 10 governors. I wrote a letter to the Honorable Chief Minister. Ma'am, it is my obligation to put forth your point of view. If there are issues, let me know. I alerted her the same day when we came to know when the conference will take place. When there was no response, I reminded her 3 weeks thereafter. I got her communication, Hemanji, on the last day. I read out the communication as such. As such. It is my duty. It is my duty to take up every issue of the state government with the central government. I have to be side by side with my chief minister. Unfortunately, in spite of my best efforts, such occasions have not arisen.